Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is well and doing well in their life. And better today I'm going to talk to you this particular topic called rational numbers. And I feel after watching this clip, your all confusion, all way of like rational numbers. What are the rational numbers? How do we solve it? Will get disappear. So and for whether you are studying for your competition level, whether you are studying for CBSE board or ISC board or any other board, rational number पढ़ लोगे, you will get every clear confusion clear out. Okay, so without wasting time, let's continue with our rational numbers. See, but if we talk about rational numbers are the numbers which are in the form of P upon Q, and Q is not equals to 0, and P and Q are what? Integers. Getting my point? I hope you are able to understand. Means what? In this case, we can say that this is a division line, this is a denominator, and this is a numerator. In this case, what do they say? That your denominator, the main condition is denominator should not be equals to 0. That's it. Numerator कुछ भी हो, okay? Suppose I say 32 upon 95. This is a rational number. 7 upon 3 is a rational number. Or second 2 is a rational number. Yes, it is a rational number because by default we can say denominator is 1. But if we say 0, this when denominator comes to 0, this is not a rational number. Why, beta? Because denominator is 0. This is the primary condition. One more thing. All fractions are rational numbers. All integers are fraction numbers. Other than this, where this condition denominator becomes 0, at that point what happened? It is not a rational number then. Okay. And let me tell you one more thing, like whether it's in positive or negative addition, subtraction, division of rational numbers, वो भी हम अभी discuss करेंगे. Let me tell you one more thing, that sets of rational numbers are being denoted by Q, set form. Okay, set form. So we can say capital Q, it's been denoted by capital Q. Rational numbers set form is being denoted by what? Q, and we can say curly braces start P upon Q, provided P and Q belongs to integers. I hope you all know this. ठीक, provided Q is not equals to 0. Condition क्या कहना है? Q is not equals to 0. बेटे Q कहें या कुछ और alphabets ले लें, P upon Q ले रखा है because this is the most common what we can say variables used. Okay, but you can take any. Why do they take Q in denominator? Better because your set values has been denoted by capital Q, that's why. Otherwise you can take any variable of your choice. But remember this, denominator should be not be equals to 0. Other than that, कोई भी value ले लोगे, तो that will be considered as your rational number. So we can say this thing is there. ये denote हो गया. This is your set form of rational numbers. Let's move to the properties of rational number: addition, subtraction, multiplication, and division. See, whether we talk about addition, subtraction, multiplication, these operations whenever performed on any two rational numbers, it will be considered a rational number. कैसे? अभी हम proof करके दिखा देते हैं. Let me clear the board. Let's continue with the properties. First, if A and B belongs to Q, set of rational numbers, then we can say A plus B also belongs to Q. How? Let me prove it out for you. For example, if I say 3 upon 2 plus 1 upon 2, अगर इसको add up करोगे बेटे, तो what will happen?
अगर इसको कैंसिल आउट भी करा तो भी क्या होगा, this is will be also a rational number because हमारी condition satisfy हो रही है, provided q is not equals to 0 means denominator हमारा 0 नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड इफ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक, ये लोगे तो इसका एडिशन करा, ये भी एक क्या आया है बेटे, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज बाय डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक, सिमिलर दिस इज फॉर एडिशन. लेट्स गो फॉर द subtraction part. If a and b belongs to q, so from here we can say the sum of two rational number is also a rational. Now let's look at a subtraction one. If let's what we can, the difference of two rational number is a rational number only. If a and b belongs to q, then a minus b belongs to q. For example, I say 2 upon 5 minus 3 upon 5. What will happen? You will get minus 1 upon 5. This will be considered as what? Your a rational number. Negativity से कोई problem नहीं है. ठीक है? Still, एक आध और दिखा देती हूँ मैं. If you want, you can say minus 5 upon 3. So what will happen? We will get 6. ठीक है, डिपेंड करता है. सो दिस इज योर माइन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगी है, वो भी कर लेते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन डन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. से इफ a and b belongs to rational number, then a multiply b or belongs to q, or we can say a dot b belongs to q or just a b belongs to q. आई थिंक इतनी बात तो समझ में आती होगी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 upon 3 into 1 upon 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6. ओके, एंड तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है बेटे, रैशनल नंबर फॉर्म हो रहा है. क्यों? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक, एक और देख के दूं. आई थिंक इट्स इनफ. अब एक नेगेटिव में पॉजिटिव में जैसे ले सकते हो. वी कैन से ये हो गया. नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ, डिवीजन प्रॉपर्टी. द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स. ओके, प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. For the division, we can say division of a rational number by a non-zero rational number is also a rational number. See, for example, if I say if a and b belongs to q, b not equals to 0, then belongs to q. ठीक है, this is q. For example, ले लेते हैं. For example, 2 upon 3 and 5 upon 7. Both are rational numbers. Both are rational numbers because denominator is not equals to 0. अब इसको divide करोगे 2 upon 3 divided by 5 upon 7. इसको divide कर लो बेटा. I think board पे clarity से दिख रहा है. 2 upon 3 divided by 5 upon 7. What will happen? 2 upon 3 will get multiplied by 5 and this will get multiplied by 7. We'll get 14 upon 15. This is what? This is also a rational number. I hope the properties of rational numbers and what a rational number is you have understood. इतना समझ में आ गया है कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, हमने बेसिकली सारे ऑपरेशंस कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ टू find out rational numbers between any two rational numbers, okay, or between any rational numbers. So how we will be able to find it out? So let's get
discussion to that particular point. So now we have to find a rational number between any two rational number. Depend करता है कि क्वेश्चन में कितने rational numbers मांगे हैं. मेथड में बता रही हूँ, उसी मेथड को बार बार रिपीट करोगे तो यू विल गेट. दो मेथड्स बताऊंगी, ठीक है. सो फर्स्ट वन मेथड, ठीक. इफ a and b belongs to rational number and then we have to find it out another rational numbers between them, then a plus b divided by 2, a plus b divided by 2 lies between a and b, provided a is smaller than a plus b on 2 is smaller than b, if a is smaller than b. समझ में आ रही बात? ठीक, इतनी बात आ रही है. So this process we can continue until we get a perfect number of like pairs asked or the rational numbers asked. ठीक, ये चीज कर सकते हो. This is method 1. Okay. एक एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊं या क्वेश्चन करके दिखा दूं so that you get a very clear idea. नहीं, पहले अभी केस मेथड 1 समझिए. मेथड 1 का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. सपोज द क्वेश्चन सेज we say for example if 3 and 5 are rational number, find a rational number between them. ये रैंडम क्वेश्चन आपके पास से लिए, ठीक है. भाई रैशनल नंबर है, अब यू मस्ट बी थिंकिंग इंटीजर्स. मैंने भी बताया था कि इंटीजर्स कैन बी अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर बेटे इसका जीरो नहीं है. जिस नंबर का भी डिनोमिनेटर जीरो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा. अदर देन दैट बाकी सब रैशनल नंबर कराएंगे. इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो ये रैशनल नंबर है. इसका केस देख लेते हैं. सो मेथड 1 अप्लाई कर लेते हैं. जरूरी नहीं है कि मेथड कौन सा मेथड किस पे लगाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है. अभी तो एक मेथड डिस्कस करें, एक और मेथड डिस्कस करूंगी. We get what? 8/2, that will be 4. So we can say 3 is smaller than 4 and smaller than 5. क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये इससे स्मॉलर, 3 is smaller than 5. अगर ये बड़ा होता तो साइन चेंज हो जाता, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट आ गया, नहीं आ गया, तो इसके बीच में लाई कर रहा है. एक और एग्जाम्पल लेकर दिखा सकती हूँ. सपोज एक वैल्यू दे रखी है आपकी 2 and 3. इसका अगर करेंगे 2 + 3/2 दैट विल बी 5/2, 2.5 आ जाएगा. तो 2 is smaller than 2.5 and smaller than 3. ठीक है, आ रही है बस. मैंने आई होप मेथड 1 कंप्लीट हो गया है और समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है. लेट्स मूव टू मेथड नंबर 2. नाउ लेट्स हैव मेथड 2. कह देते हैं इफ a/b है और c/d है, इसमें अगर आपको निकालना हो क्या रैशनल नंबर, तो बेटे क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दो एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दो. सिंपली आपकी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी. चलो करके दिखाएं, ठीक है. ओके, सपोज ऐसे 2/3 है एंड वी हैव 3/5. एडअप कर लो. इसमें एलसीएम वगैरह वाला मेथड नहीं बता रही हूँ अभी. so that will be 6/8 or we can say 3/4. so 2/3, 3/4 आ गया, ठीक है. यू कैन सी, समझ में आ रही है बात. ये आ गया आपका सेकंड मेथड. इसमें एलसीएम नहीं लिया हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डायरेक्टली एडअप कर दिया डिनोमिनेटर से, ठीक है. एलसीएम नहीं लिया है. यू कैन सी a + b, a/b एंड c/d था, तो उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड किया. हमने एलसीएम नहीं लिया है नॉर्मली. I have already discussed method 1 and method 2. Now I've taken two questions. One I'll be solving with method 1 and one I'll solve with method 2 so that you get a very clear picture. ठीक है. So let me draw a line over here. So this one I will be doing with method 1. So 7 + 8/2 that will be what we can say
that will be 15 upon 2, that will be 7.5. तो 7 is smaller than 7.5, smaller than 8. ठीक, ये आ गया एक रैशनल नंबर. यहाँ पे मैंने लिखा है आ रैशनल नंबर. इफ इट आस्क टू रैशनल नंबर, तो इसी स्टेप को रिपीट कर दो, फिर इसको रिपीट करना. तो दो निकल कर आएंगे. जैसे सपोज 7 प्लस 7.5 अपॉन 2, और एक कर दो 7.5 प्लस 8 अपॉन 2. इसको करोगे तो यू विल गेट 14.5 अपॉन 2, डेट विल बी 7.25 हो जाएगा. इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यू विल गेट व्हाट 15.5 upon 2, that will be considered what, करो उसको डिवाइड, यही आएगा. ठीक, नहीं अपॉन 2, 2 लिख दिया बेटा मैंने गलती से, सॉरी भाई. 8 प्लस 7 हो जाएगा 15, 15 आएगा बेटा 7.75. तो मैंने अब कितने इंसर्ट करा दिए? 1 2 इंसर्ट करा दिए, और टोटल देखेंगे तो 3 करा दिया. So you can write 7 is smaller than 7.25, smaller than 7.5, smaller than 7.75, and smaller than 8. तो कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं बेटे? 1 2 3. सिमिलरली सेम स्टेप फॉलो करते रहोगे. जितने भी रैशनल नंबर्स पूछे हैं आपसे निकालने के लिए, आप निकाल सकते हो आराम से इजीली. ये हो गया आपका मेथड 1 था. ये कौन सा था बेटे? मेथड 1 से. ठीक है, अब मेथड 2 से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. कैसे करेंगे? मेथड 2 से. आई एम राइटिंग हियर. जरूरी नहीं है कि यू हैव टू मेंशन द मेथड कि कौन से मेथड से कर रहे हो. ठीक है ना, यू कैन डू इट एज यू लाइक. तो मेथड 2 के बताया था हमने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करो विदाउट टेकिंग एलसीएम. ठीक है, सो वी हैव 5 upon 9 प्लस 11 प्लस 8 कर दो, दैट यू विल गेट 13 upon 20. ठीक है, ये इसके बीच के नंबर आ जाएगा. नेक्स्ट, तो 5 upon 9, ठीक. अब इसको एडअप कर दो, इसको एडअप कर दो, प्लस 20 प्लस 13 एंड 13 upon 20 प्लस 8 upon 11. एडअप करो, कितना आएगा? 18 and this will be 29 and this will be 21 upon 31. तो देखो ये क्या आएगा? 5 upon 9 is smaller than 18 upon 29, smaller than 13 upon 20, smaller than 21 upon 31, smaller than 8 upon 11. जब वैल्यू डेसिमल्स में लेकर आओगे ना तो बेटा यू विल गेट द करेक्ट आंसर. बिकॉज हमने क्यों लिख दिया इसमें पोजीशन? क्योंकि हमें पता है कि भाई हम कौन से सीरीज से लेकर आ रहे हैं. क्योंकि इन पे पहले बीच में निकाला है, इनके दो का बीच का निकालेंगे तो ये आएगा, इन दो का निकालेंगे तो ये आएगा. तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज पुट अप करनी है. आई थिंक वॉइस इज क्लियर. आई एम सो सॉरी, माइक वाज ऑफ. I'm so sorry for that. कि somehow you will be facing some problem with the voice. वैसे मेरी आवाज बहुत पटाखा है. Still I need a mic. तो this thing is there. I hope इतनी बात समझ में आ गई है कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, उन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं. You are able to understand this thing.